ক্ষেত্ৰলৈ গৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালো। জুবিন ক্ষেত্ৰ আসলতে সকলোৰে বাবে পবিত্ৰ ঠাই, গতিকে জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰাটো একেবাৰে উচিত নহয়, এনে ধৰণৰ মন্তব্য তেওঁ আগবঢ়াইছে। এই মুহূৰ্তত আমি সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ। আৰু সংগোপনে জুবিন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। মই জুবিন গাৰ্গক লৈ কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু সেয়ে মই সংগোপনে জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ গৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাম। জুবিন ক্ষেত্ৰ সকলোৰে পবিত্ৰ ঠাই, জুবিনক লৈ ৰাজনীতি কৰাটো উচিত নহয়। জুবিন আমাৰ বাবে আৱেগ হয়। জুবিনক হেৰুৱাই অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে কান্দিছে। আৰু ভাৰতৰ সকলো প্ৰান্তৰ পৰা মানুহে সেই সময়ত অসমৰ মানুহৰ দুখ বুজিছিল। অসমৰ আত্মাৰ কণ্ঠ আছিল জুবিন গাৰ্গ। অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কথা কৈছিল জুবিন গাৰ্গে। আৰু জুবিনে যি কৈছিল তাৰ হকেই আমি যুঁজ কৰিছো। জুবিনক লৈ ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে। ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত আছিল জুবিন গাৰ্গ। জুবিন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ এই মন্তব্য আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ। সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ। তাৰ লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে জুবিন গাৰ্গক লৈ তেওঁ কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা নাই, সেইবাবে সংগোপনে জুবিন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু জুবিন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে মই সংগোপনে জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ গৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালো। জুবিন ক্ষেত্ৰ সকলোৰে বাবে পবিত্ৰ ঠাই হয়। জুবিনক লৈ ৰাজনীতি কৰাটো একেবাৰে উচিত নহয়, কাৰণ জুবিন আমাৰ বাবে আৱেগ হয়। জুবিনক হেৰুৱাই অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে কান্দিছে। আৰু সেই সময়ত যি সময়ত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ঘটিছিল, অসমৰ মানুহৰ দুখ বুজিছিল ভাৰতৰ সকলো প্ৰান্তত থকা মানুহে। অসমৰ আত্মাৰ কণ্ঠ আছিল জুবিন গাৰ্গ। অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কথা কৈছিল জুবিন গাৰ্গে। আৰু জুবিনে যি কৈছিল তাৰ হকে আমি যুঁজ কৰিছোঁ। জুবিনক লৈ কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰা নাই বা কৰিব বিচৰা নাই বুলি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে উল্লেখ কৰিছে। জুবিন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিছে, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এনে ধৰণৰ মন্তব্য তেওঁ আগবঢ়াইছে। তেওঁ কি কৈছে আমাৰ ওচৰত সেই মন্তব্য আহি পৰিছে, আমি শুনাব বিচাৰিছোঁ। और हमेशा ये सोच रही है कि ऐसी चीज़ों को हमें इन चीज़ों का राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये एक भावना है। और कल भी मैंने बात की अपने कार्यकर्ताओं से कि जुबिन जी के जब उनकी मृत्यु हुई तो हम लोग जो असम के नहीं हैं, हमने जब देखा कि किस तरह से असम की जनता उनसे प्रेम करती है, किस तरह कितनी श्रद्धा थी, चाहे कोई भी परिवार का हो, माता पिता बच्चे बेटे बेटियां भाई बहन, सबके आंखों में आंसू थे। और हमने ये सोशल मीडिया में हमने ये सब देखा। तो हम बाहर से जो देख रहे थे, हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है ये भावना, ये इमोशन जिसकी वजह से जनता इस व्यक्ति से जुड़ी हुई है। तो मैं कल भी कह रही थी अपने कार्यकर्ताओं से कि जुबिन जी एक तरह से असम की आत्मा की आवाज़ थी, असम की अभिव्यक्ति थी, जो आस्ते आस्ते मेरे ख्याल से बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है, जितने लोगों से मैं बात कर रही हूँ और मैं मिल रही हूँ, उनको ऐसा लग रहा है कि एक हमारा जो असम है, जिसके लिए मतलब जो एक एकता का असम था, एक सभ्य असम था, आज कल रोज़ हिंसक बातें हैं, आक्रामक बातें हैं, ये हमारी सभ्यता नहीं है। असम की जो सभ्यता है उसके बारे में गाया जुबिन जी ने। जो भी जितने भी उनके गाने थे, अगर आप सुने, उसमें एक भी गाने में ये नहीं था कि इससे नफ़रत करो, ये तुम्हारा दुश्मन है, इसको मारो, नहीं था ये। हर गाने में, हर उनके जो वक्तव्य में यही बात थी कि प्रेम, एकता, असम की अस्मिता, असम की संस्कृति, असम की सभ्यता, असम क्या है। और मैं कल अपने कार्यकर्ताओं को कह रही थी कि देखो, हम भी उसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। एक तरह से हमारी लड़ाई जो है असम की संस्कृति, असम की सभ्यता को बचाने की लड़ाई है।
और हमें ये बात समझनी है बस। इसका हम जुबिन जी का इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहते और ना किसी को करना चाहिए। वो एक राजनीति से ऊपर थे। उनका जुड़ाव जनता के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव था, एक जज्बाती जुड़ाव था। वो पॉलिटिक्स में नहीं थे। ये नहीं थे कि सीएम बनने जा रहे हैं कि जनता उनसे किसी वजह से, पॉलिटिकल वजह से जुड़े। जनता इसलिए जुड़ी क्योंकि जनता के दिल में वही भावना थी जिसके बारे में जुबिन जी बात करते थे। तो आज भी सुबह जब मैं गई तो फ्रैंकली बहुत ही मेरे लिए भी इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि मैं ज़्यादा जानती नहीं थी जुबिन जी के बारे में पहले, और पिछले महीनों से मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि किसी ने उनके लिए कुछ जो उनको पसंद था, लोग वहाँ पे 1 बजे रात तक आ रहे हैं। कोई अगरबत्ती जला रहा है, कोई किताब छोड़ रहा है उनके लिए, कोई फूल छोड़ रहा है। तो उसमें ये मतलब इस तरह के व्यक्ति जिनके साथ लोग इस अपनी भावना से, अपने दिल से जुड़ते हैं ना, बहुत कम होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं। और ये हमेशा सबके दिलों में, अब हम सब जानते हैं उनके बारे में, देश भर जानता है, तो सबके दिलों में ये एक पवित्र जगह होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसको किसी भी नकारात्मक सेंटिमेंट से जोड़ना नहीं चाहिए। कि इसकी अपनी जगह है, जनता के दिल में जगह है और उसका सब आदर करना चाहिए। इसीलिए मैं गई, पॉलिटिकल वजह से नहीं, मैं इसीलिए गई क्योंकि मैंने सोचा मैं पहली बार यहाँ आई हूँ उनकी मृत्यु के बाद, तो मुझे श्रद्धांजलि चुपचाप से अर्पित करनी चाहिए, तमाशा नहीं बनना चाहिए उसका। तो मेरी यही इच्छा थी। আৰু এয়া মন্তব্য আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে। তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে জুবিন গাৰ্গক লৈ কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা নাই আৰু সেইবাবে আচলতে সংগোপনে তেওঁ জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ আহিছিল, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ বুলি আহিছিল। আৰু জুবিন গাৰ্গক লৈ যিসকলে ৰাজনীতি কৰি আছে তেনেধৰণৰ কাম কৰাটো উচিত নহয়, তেনে উদ্দেশ্যৰে তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ভাৰতৰ সকলো প্ৰান্তৰ মানুহে বুজিছিল অসমৰ মানুহৰ দুখ। যি সময়ত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ঘটিছিল, অসমৰ আত্মাৰ কণ্ঠ আছিল জুবিন গাৰ্গ, অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কথা কৈছিল জুবিন গাৰ্গে। এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে এতিয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। জুবিন ক্ষেত্ৰ তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰে, তাৰপিছতেই এই ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। তেওঁ কৈছে যে মই সংগোপনে জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ বুলি আহিছিলোঁ, কাৰণ মই একেবাৰেই জুবিন গাৰ্গক লৈ কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ। সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে আৰু তাৰপিছতে স্পষ্টকৈ তেওঁ এই কথা কৈছে। জুবিনক হেৰুৱাই অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে কান্দিছে, গতিকে জুবিন সকলোৰে যিহেতু আৱেগ হয়, গতিকে জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰাটো একেবাৰে উচিত নহয় বা কোনেও কৰিব নালাগে।